Okay. Now, I'll be taking your newspaper reading. Okay. Before starting this class, let me tell you, we all get away from reading newspapers. Do we? We all get away. अभी के क्लास में थोड़ा we all get away from reading newspapers, right? Because we feel that reading newspaper is very difficult. Difficult is not just reading newspaper, it's about not understanding certain words, not getting along the language of the newspaper. But let me tell you, since you're all in bridge class, especially to PGDM students, this is the reason why I asked how many students are from PGDM in this class. PGDM or the PG course is probably the last lap in academic career. For those of you who do not want to pursue further in academics में जिसको पढ़ना है वो फिर PhD वगैरह. But for those who want to work or sit in any exams, please understand newspaper reading is very, very important. Why newspaper reading is important? You will be coming across different business terms. Since this is the course for business, you will be coming across different business terms. But the understanding of those business terms will develop only when you substantiate that with newspaper reading, which means that currently what is going on in the market, in the business, in the industries, in the companies, that is the better way to understand your business. For example, कुछ दिन पहले, since this is the first class, that is why I'm giving you some introduction about why newspaper reading is important. कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा attrition rate के बारे में, या सुना होगा, या कभी न्यूज़पेपर नहीं देखते हैं तो बिल्कुल नहीं सुना होगा, right? What is the literal meaning of attrition? Attrition, A-T-T-R-I-T-I-O-N, attrition. What is the literal meaning of attrition? Attrition का मतलब होता है टूटना. Okay? टूटना. Now, attrition rate for an employee, what can that mean? किसी एम्प्लॉय के लिए ऑर्गेनाइजेशन का attrition rate का मतलब क्या हो सकता है? No, that employee leaving the organization, ऑर्गेनाइजेशन से अलग होना. इसीलिए चीजों का लिटरल मीनिंग जानना जरूरी होता है. Although we use it in different perspective, but the core meaning of the word remains the same, right? Newspaper reading पढ़ते वक्त, करते वक्त, last bench, ध्यान रखिएगा, हर वर्ड जानना जरूरी नहीं. You're not going to be an English professor, right? हर वर्ड जानना जरूरी नहीं है, लेकिन वैसे वर्ड्स जानना बहुत जरूरी है जो frequently used words हैं. In language, in terminology, in your business. जैसे आप जब business पढ़ना शुरू करेंगे, there are going to be some very frequently used words like sales, like attrition, like labor turnover, like employee welfare, like CRR ratio. Marketing में होंगे तो उसके अलावा. Understood? So, I'll make sure कि इस class में we'll pick up small articles so that more number of students in the class get opportunity to come here and read it out. तुरंत परेशान नहीं होना है कि समझ में नहीं आ रहा है, रातों रात ये स्किल डेवलप नहीं हो सकती है, ये भी बात समझिए. That is why there is this bridge course. Okay? These things which are habitual things. Okay? ये याद करने की चीज नहीं है कि आप परेशान होकर के रट के याद कर दिए. Whatever is there in your habit, in your behavior, it takes time to develop. कुछ छोड़ने में भी टाइम लगता है, नई हैबिट्स डेवलप करने में भी टाइम लगता है. Newspaper reading is one of them. Got it? So we'll take up small articles. हर आर्टिकल में एक दो वर्ड
टेंशन नहीं लेना है वर्ड्स का। एक दो वर्ड जो कि हमेशा यूज होता है, कॉमनली यूज होता है, वैसे वर्ड्स जो टाइम्स ऑफ इंडिया का या किसी न्यूज़पेपर का लिंगो है, लैंग्वेज है, वैसे वर्ड्स पे हम लोग को फोकस करना है। एक महीना थोड़ी मुश्किल होगी, मुश्किल इन द सेंस कि ज्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट मंथ से आपको ऐसी आदत हो जाएगी कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि आज कुछ रह गया। और ऐसा ही होता है, मम्मी पापा को देखे हो कितना रिलीजियसली अखबार पढ़ते हैं, करते हैं ना, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया उनके लाइफ का। सो इमेजिन यू पीपल टेकिंग द बिजनेस कोर्सेज, यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट। कमीशन एग्जाम्स होता है, पीपीएससी यूपीएससी, 60% syllabus is the newspaper only. That is newspaper. इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ने के बाद भी न्यूज़पेपर रीडिंग constitutes 60% of the syllabus. तो मतलब आपको इकोनॉमिकली भी अवेयरनेस दे रहा है ये 4-5 पेज का न्यूज़पेपर, सोशल अवेयरनेस भी दे रहा है, कोई एक ऐसा आर्टिकल है जो सोसाइटी में करंट चल रहा है। As a citizen of the country, you should not be just confined towards your, subjects, but as a mature citizen, you should understand कि बाकी चीजें भी जो समाज में आसपास चल रही हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे शायद आपके बिजनेस से करंट अफेयर्स, करंट जो अभी चल रहा है, विश्वनाथ टेम्पल और ज्ञानवापी मस्जिद, ये लिंक्ड ना हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, which makes the headline for today's newspaper. Got it? Got it? Okay. So, in this class, raise your hands those who are interested in coming and reading out the newspaper. Very good. I'm happy to see the numbers. Put your hands down. But from the next class, I will pick students by my choice, so that जिनको reluctance है, जो hesitate करते हैं, they too have a chance. आप यहाँ आएंगे, डरेंगे, फिर भी पढ़ेंगे, जब जाएंगे तो आपको फील होगा कि आप अच्छा कर सकते हैं। Okay, so there is no point नहीं आना, कोई चीज प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं सीखना प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चलो आ जाओ। किसने हाथ उठाया था? You come first. Read out the newspaper. Say good afternoon class. Which one? This one, the headline thing. Read out first. Say good afternoon to class. Good afternoon to all. My name is Sunidhi, and I am going to read the headlines and the news. So the headline says, Gyan Vyapi survey report given to court may back Shivling claim. The court-appointed commission tasked with surveying the Gyan Vyapi mosque complex on Thursday submitted to Varanasi Civil Judge Senior Division Ravi Kumar Divakar a 15-page report along with 32 GB of video footage and photographs and a sheaf of map packed in 3 sealed boxes. In adherence to a directive from the Supreme Court, which is hearing a petition challenging the survey, the civil judge didn't pass any order. While the contents of the report possibly won't be known until at least the next hearing, in the Srinagar Gauri worship case on May 23, sources linked to the survey claimed several objects found while scanning the inner sanctum of the complex over 3 days appeared to be part of old temple architecture. They said a cylindrical structure carved out of black stone in the middle of Wuzu Khana ablution pond resembles a shivling rather than a portion of a fountain, as claimed by the Anjuman Intizamiya Masjid AIM that managed the Gyan Vyapi Mosque. When the water was drained out of the pond, the cylindrical structure became visible, the source said. The plaintiffs and their lawyers started claiming it was a shivling, while the mosque authorities declared it was a fountain, lying defunct for years. The masjid management munshi, who was part of the survey team, lying defunct for years. Defunct मतलब not in function. Not in function. ये defunct word बहुत चीजों के साथ यूज किया जाता है. Okay, जैसे the entire proposal was defunct, यानी
useless. Not in function को useless भी बोल सकते हो. ठीक है? Write down the word of the day. This is the first word, defunct. D-E-F-U-N-C-T. One more. D-E-F-U-N-C-T. Defunct. D-E-F-U-N-C-T. मतलब not functional. Useless. Defunct. D-E-F-U-N-C-T. The masjid management Munshi, who was part of the survey team, apparently said the sprinkler wasn't functional for a long time, but could not recall the exact year when it became defunct. First he said 20 years and then 12, the sources said. Okay, good. Thank you. She read it nicely. She read it nicely. अच्छा पढ़ा इसने. Good confidence. आपको भी जब न्यूज़पेपर रीड आउट करना है तो ऐसे संवाददाता की तरह बोलते नहीं जाना है, बिना सुने, बिना पॉज लिए, है ना? ऐसे समझना है, ऐसे रीड आउट करना है न्यूज़पेपर कि आपको खुद को पहले वो इन्फॉर्मेशन मिले, एंड देन यू आर गिविंग आउट, डिसेमिनेटिंग द इन्फॉर्मेशन टू अदर्स आल्सो. क्योंकि जो यहाँ पे पढ़ेगा सिर्फ ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है न्यूज समझना. हम आप लोगों से भी पूछ सकते हैं कितना समझ में आया, कितना नहीं. और शुरू में टेंशन नहीं लेना है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, वो धीरे धीरे हैबिट डेवलप करेगी. These are some commonly used words which will be used thoroughly. So keep writing these words. किसी एक दिन क्लास में हम उसका sentence usage भी बता सकते हैं. Okay? Next bit. Next, anyone from this side? You come. We'll have time. Don't worry. This class. Right. Read this. Criminal loot. Say good afternoon to class. Good afternoon, everyone. I am Anand Gupta. Good afternoon, everyone. I am Anand Gupta. Today news is criminals loot 15 lakh from Gaya SBI branch. Criminals looted Rs 15.59 lakh in cash from State Bank of India branch at Gudaru under Tekari subdivision in Gaya district on Thursday. The incident occurred soon after the branch was opened around 10:30 a.m. The criminals took the guard of the bank, Santosh Kumar, customers and the staff at gunpoint. They also snatched cell phones from customers and bank employees. The criminals asked the cashier of the bank to hand over the keys of the locker. When the cashier said the keys were with another staff, the criminals isolated him, having failed to find the key. Assaulted him, having failed to find the key of the locker. The criminals collected the money from the cash counter and decamped. They also took away DVR of the CCTV camera installed at the bank. Completed, ma'am. Good. Okay. इतना पता है कि नेगेटिव के सेंस में होता है. Assault means Social. ये वर्ड सुना है ना बहुत बार न्यूज की लैंग्वेज में, ये आगे भी बहुत बार यूज होगा. राइट डाउन. असॉल्ट, AAULT, assault. Assault means to attack. To attack. Attack. हमला करना, जिसको हिंदी में बोलोगे. हम इसलिए तुम लोगों को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं बता रहे क्योंकि वर्ड का यूसेज से मीनिंग अलग होता है. ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ. आप पूरा सा भाई बात ऐसे कराती हूँ क्लास ऐसे. Hello everyone, good afternoon.
And today's headlines is top court awards Sidhu 1 year jail term in 88 road rage case. On the heels of a humiliating electoral defeat, former Punjab Congress President Navjot Singh Sidhu was sentenced to 1 year's rigorous imprisonment by the Supreme Court on Thursday in a 1988 road rage case in which a person had died from fist blow injuries. Admitting that the March 15, 2018 judgment by a bench headed by Justice J. Chilmiswar was unduly lenient in jetting off Sidhu. Lenient. In letting off Sidhu with a mere fine of Rs 1,000 in a case under Section 323 of IPC, voluntarily causing hurt. A bench of Justices A.M. Khanwilkar and Sanjay K. Kaul remedied the error by imposing 1 year's rigorous imprisonment on the former Indian cricketer. In addition to the fine, however, the bench refused to expand the scope of the offence to culpable homicide not amounting to murder under Section 304, second of IPC. Continue to run. इसमें से दो एक वर्ड तुम लोग को बताएंगे हम. वॉलंटरली मतलब हिंसक रूप से. दैट इज वायलेंट. जो तुम कह रहे हो वो वायलेंट है. खुद से जो जैसे नहीं. वॉलंटरली मतलब वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट. वॉलंटरी माने जो मूवमेंट आप जानबूझ के करते हैं, अपने मन से करते हैं. जैसे ये हैंड्स का मूवमेंट वॉलंटरी हो गया. इनवॉलंटरी यानी तुम्हारा हार्ट बीट कर रहा है, उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है. दैट इज एन इनवॉलंटरी मूवमेंट. यू कैन नॉट कंट्रोल दैट मूवमेंट. सिमिलरली वॉलंटरी मतलब जानबूझ के अपने से जो इनिशिएट किया गया. जैसे तुम्हारे टर्म्स में व्हाई यू सो लेट, डोंट बी सो लेट. ओके, हाफ द क्लास इज गॉन ऑलमोस्ट. ओके, वॉलंटरी मतलब जैसे दिस बॉय वॉलंटियर्ड द प्रोजेक्ट, मतलब उसने खुद से आगे बढ़ के इंटरेस्ट दिखाया प्रोजेक्ट में, खुद की इच्छा से. बिल्कुल ठीक है. दिस इज वॉलंटरी. रिगरस माने rigorous, 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 rigorous. rigorous माने जैसे बहुत rigorously पढ़ाई होती है, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस के साथ. ओके, ज्यादा huge in amount, rigorously, बहुत rigorously डांट दिया, बहुत rigorous discipline है. Got it? Lenient माने एक वर्ड उसने lenient गलत पढ़ा था, that is lenient. Lenient माने LENIENT, lenient. LENIENT, lenient माने nobody, no, not reliable. ये मैम लीनियंट मार्किंग करती हैं. हाँ, छूट देना. ये मैम लीनियंट मार्किंग करती हैं और वो मैम बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करती. दिस इज लीनियंट. नाउ यू अंडरस्टैंड. The rules regarding discipline in this college is not at all lenient. मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट है. ठीक है. Who wants to come next? Girls side. Good afternoon, everyone. Today's headline is Raids on Purnia video yield DA worth 1.5 crore. Patna, the economic offense unit of the state police on Thursday raided 3 residential premises and office of the Grua Block Development Officer Ajay Kumar Prince in Purnia in connection with a disproportionate assets case lodged against him. The EEO
slaves unearthed assets worth around Rs 1.50 crore, which is 2 to 9% more than his known sources of income. Amazed by the BDO, simultaneously searches were conducted him Hughes in defense colony in Danapur, Dholka in West Bengal. His ancestral home in Wajidpur, Kasturi village, Vaisali, and his office in Dagaru, Purnima. A DA case under Section 13 and 13(1)(b) of the Prevalence of Corporation Act 1918 was loaded against Prince on Wednesday. Thank you. This was 1 minute. This was the article on raid on Purnia BDO, Block Developmental Officer, yield DA worth 1.5 crore. आय से अधिक संपत्ति, सुने होगा ये वर्ड न्यूज में. गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास करोड़ों करोड़ नहीं होता है क्योंकि उनकी सैलरी उतनी नहीं होती है. तो ये उसी के बारे में कितना एक्यूमुलेटेड इनकम कहाँ से आया. ठीक है, इसमें एक वर्ड था Thursday raided 3 residential premises and offices of something block. Premise इस वर्ड को हम इसलिए लिए क्योंकि इसका 2 मीनिंग है. तो अगर आप डिक्शनरी खोल के हर वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे तो मीनिंग जानोगे, यूसेज नहीं जानोगे, है ना. प्रेमाइसेस का क्या मतलब होता है. एक प्रेमाइसेस क्या, कॉलेज प्रेमाइसेस मतलब हाँ बिल्डिंग, कॉलेज का ग्राउंड परिसर. हिंदी में सबसे अच्छा वर्ड परिसर. होम, नो नॉट होम, परिसर, कॉलेज प्रेमाइसेस. ठीक है, लाइक you have to be in college uniform when you enter college premises. You have to switch off your mobile phones when you enter college premises. ठीक, समझ में आ गया. लेकिन premise, P-R-E-M-I-S-E, P-R-E-M-I-S-E, premise, P-R-E-M-I-S-E, premise. हो गया. लास्ट में प्रेमाइस मतलब परिसर. समझ में आया पहला यूसेज वर्ड का. द अदर थिंग, जैसे किस प्रेमाइसेस पे इस आईएएस ऑफिसर को जेल किया गया, किस ग्राउंड पे, ऑन विच सर्कमस्टेंसेस, ऑन विच ग्राउंड. जैसे ये स्टूडेंट किस प्रेमाइसेस पे इसको क्लास के बाहर निकाला गया, इसको सस्पेंड किया गया. द ग्राउंड, आधार. ठीक है, समझ में आया. दोनों का एक ही वर्ड का अलग अलग यूज. Who's coming next? आ जाओ, तुम आ जाओ. यू, तुम्हारे पीछे. Say good afternoon to class first. Good afternoon, everyone. My name is Rahul Kumar Sharma. Today I'm gonna read the newspaper, which is Times of India, and the news are given below. News is Former Gaya DM booked for chopping down selling trees. As part of the state's zero tolerance policy towards corruption, the Special Vigilance Unit of Bihar Police on Wednesday registered a case against former Gaya DM and a 2006 IAS officer Abhishek Kumar Singh on charge of corruption and misuse of his office. According to officials, the IAS officer illegally cut the costly timber trees at the official residence of the DM during his posting and sold it without taking permission. The FIR was lodged under section 120B of the Indian Penal Code and 13(1)(a) of the
Prevention of Corruption Act with SVU. Patna Singh was accused of illegally felling many of expensive trees in connivance with unknown public servants posted in the forest and regions Department of Gaya district. SVU SP JP Misra on Thursday said the charges leveled against the former Gaya team would be investigated. It was come to our notice then when Singh was DM in Gaya, he had given order to cut expensive trees for personal gains and sold the wood illegally. He had not taken any permission from the Environment and Forest Department before cutting the trees. Besides the revenue should have gone to the government treasury. Instead, it ended up Singh's profit as a result. The state government suffered financial losses. He said, Singh has taken premature repatriation to his home cadre in Tripura. He had last served as the managing director of Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Limited. In January this year, apartment from chopping and selling these irregularities have also been found in the grant of arms licenses during his tenure. He was removed from the post of MD of BUIDCO based on the preliminary investigation. Meanwhile, preliminary investigation. Meanwhile, department proceedings have been initiated against former IG Amit Lodha and ex-SSP of Gaya Aditya Kumar for alleged nexus with liquor and sand mafia. Very good. Very good. Take it. This article was about a former Gaya district magistrate, former Gaya DM, who was booked. मतलब booked मतलब अब यहाँ booked का literal meaning देखोगे तो क्या book का movie ticket, book का ticket नहीं, who was booked मतलब जिसको charge किया गया. ठीक है, ये लैंग्वेज होता है. हर बात तो मीनिंग नहीं समझोगे ना. बुक में डिक्शनरी देखोगे तो डिक्शनरी में तो तुमको बुक का मतलब हो जाएगा बुक किताब या फिर बुक करना. when this is the talk about Gaya DM, he is booked मतलब he is charged of chopping trees and selling down. Chopping down and selling trees. Chopping मतलब काटना. ठीक है, आपको पता है कि कुछ पेड़ बहुत कॉस्टली होते हैं, वो पेड़ काट के बेचा जाता है क्योंकि उसका बहुत कुछ फर्नीचर बनता है और भी महंगी चीजें होती हैं. आपको मालूम होगा कि वन विभाग वाले जो हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट वाले, वो हर पेड़ को नंबर देते हैं और मार्क करते हैं. तो पेड़ आप नहीं काट सकते हैं, वो इलीगल है. सो अगर कोई ऐसे, जैसे कुछ दिन पहले चिड़ियाखाना में पेड़ काटने का केस आया था, राइट, आप ऐसे पेड़ काट के बाहर नहीं सेल ऑफ कर सकते. गेट इट? नेक्सस मतलब NEXUS. नेक्सस. नो, नेक्सस का मतलब होता है कनेक्शन. ह्यूज कॉर्पोरेट नेक्सस मतलब कॉर्पोरेट कनेक्शन. नेक्सस विद अंडरवर्ल्ड मतलब अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन. नेक्सस का मतलब हाँ कनेक्शन. गॉट इट? We'll end the class here today. In the next class, please, I want to see more hands who voluntarily want to come here and read the newspaper. Okay? Chalo. Thank you.